welcome back to my channel. Hi everyone, I hope you guys are doing fine, your families are doing great as well. So if I am getting the pleasure to introduce myself to you for the very first time, hi, I am Tishika and I am a tarot card reader and a spiritual worker. So as you guys must have read the title, today we are going to discuss about the Scorpio season. So as we all know, the Scorpio season is about to start from 23rd of October till 22nd of November. So we are going to discuss about how this month will be going to be for the Scorpios. So if you are a Scorpio, then don't forget to watch this video till the end, and if you find it informative, don't forget to subscribe to my channel and do like this video as well, and drop in comments that what video do you want the next. So without any further ado, let's get into this. So starting with the Scorpios, I'm going to divide them into 3 numbers so it can resonate with more of you people. And remember, this is a collective reading, not done for somebody specifically, so it may or may not resonate with you. If you want to book a one-on-one session with me, I am giving my Instagram handle right here, so you can just DM me and book a one-on-one session. So I am going to give you 3 numbers, that is 1, 6 and 8. Just choose one number intuitively and then we will start with the reading. I hope you guys have chosen one number among 1, 6 and 9. Okay, so we will go with 1 and we are going to check that how will be the Scorpio season going to be for the people who have chosen the number 1. How is the Scorpio season going to be for the people who have chosen the number 1? So till I'm shuffling the cards, I just want to tell you guys that Scorpios are somebody who are having the most leadership qualities. Someone who does not like working under somebody, or someone who just giving their best, whether it comes to their relationships, whether it is their work life, whether it is their personal, professional, any sort of life. So how will be the Scorpio month going to be for the people who have chosen the number 1? So if you have chosen the number 1, make sure to listen to it really carefully. As we do it always, we are going to take 1 card for career, 1 card for love and 1 card for finance. Starting with the career card. So I have got the Fool card for the career thing. So remember not to take any decision with your heart. हमेशा दिमाग की सुनना, हर चीज़ को equally balance करके चलना. Do not take any immature decisions or any decision based on your thoughts कि हाँ I always wanted to do this and let's take a risk. Do not be a risk taker this time in your career. इस month में हो सकता है you get a lot of opportunities, you will be getting a lot of things in your life, whether it comes to career, whether it comes to opportunities in career, anything. So remember not to be a fool and take the opportunities really well and utilize your strength and abilities the right way. Coming to the love card, so I have got this 8 of Cups here just for the love. So this reading I am repeating, this is for the people who have chosen the number 1 and have this zodiac sign as Scorpio. It may or may not resonate with you, so do not take it on your heart. It can resonate with most of the people, but it is a collective reading. Coming to the reading, I have got 8 of Cups. Remember, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी तक हार्ट ब्रेक्स मिले हों, और अगर नहीं मिले हैं तो हो सकता है इस स्कॉर्पियो मंथ में यू विल गेट अ हार्ट ब्रेक. ठीक है, हो सकता है यू विल be getting some memory hitbacks as well. अगर आप लोगों का साइन स्कॉर्पियो है and you have gone through a breakup or separation or anything, हो सकता है you guys might miss the people, might miss that person a lot in your life. हो सकता है बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको उनके थॉट्स बार बार आए, बहुत ज़्यादा थॉट्स आए, बट रिमेंबर कि आपको हमेशा पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है, रादर देन फोकसिंग कि वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया या कुछ भी हुआ या म्यूचुअली आप लोगों ने एंड की चीज़ें. रिमेंबर दैट इट इज़ फॉर योर गुड. यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अहेड इन लाइफ. यू विल मीट the best person that will be more better than the past one. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. You are going to get an amazing person in your life. So focus on the positive part rather than focusing on the wrong part कि वो छोड़ के चले गए. Just focus कि उसके बाद आपने कितनी चीज़ें better करी हैं अपनी life में.
इफ़ यू आर गोइंग टू गेट अ सेपरेशन और समथिंग, तो हो सकता है कि आप बाद में रीयूनाइट भी करो, बट द थिंग इज राइट नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आपका सेपरेशन होता भी है तो rather than running behind that person, try to focus on yourself more. So coming to the finance ka card, I have got the High Priestess card. So this card tells you कि try to bring in more balance to your finances rather than spending money like water. इस तरीके से ना करके try to bring in balance, try to spend where it is worth it. ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स पे स्पेंड कर रहे हो. ट्राई टू फोकस और इन्वेस्ट द मनी जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी मिले या जहाँ पे आपको लगे स्पेंड करना वर्थ है. ठीक है, ट्राई टू स्पेंड देयर. अगर इफ़ यू आर गेटिंग मनी तो ज़रूरी नहीं है आप सबको बोल बोल के बताओ. ट्राई टू बी अ लिटिल मोर सिक्रेटिव, ट्राई टू कीप इट टिल यू जस्ट योर सम लव्ड वंस, 2-3 पीपल दैट यू ट्रस्ट द मोस्ट. उन्हें बता दो. डू नॉट टेल एवरीबडी कि हाँ आई हैव गॉट दिस मनी, आई हैव गॉट दिस मनी, आई विल बी गेटिंग मनी. डू नॉट टेल देम बिकॉज नो बडी इज़ ऑनेस्टली हैप्पी टू सी यू ग्रो इन योर लाइफ. तो हमेशा ध्यान रखना दैट यू कैन ऑल्सो गेट प्रमोशंस दिस टाइम, बट प्रमोशन के लिए यू नीड टू बी वेरी सिक्रेटिव. किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो. इफ़ यू ट्रस्ट समबडी, सिर्फ उन पे ट्रस्ट रखो जिन्हें आप बहुत टाइम से जानते हो. फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 years यू नो दैम, और एटलीस्ट 10 years यू नो दैम. ठीक है, तो सिर्फ उन पे ट्रस्ट करो and do not trust anybody blindly when it comes to finance. If somebody asks you for money, don't go ahead until or unless you know them really well in person कि हाँ that person will return you the money on time. Starting with the people who have chosen the number 6 and have the zodiac sign Scorpio itself. So till I am shuffling the card, I wanted to tell you guys one more thing कि Scorpios ना बहुत ही emotional होते हैं. They are really emotional. मतलब people say कि they are really clever, but it's not like that. Clever होते हैं, but when it comes to emotions ना, तो they do not know कि अपने emotions को balance कैसे रखना है. They rather just fell in love or fell in emotions and अपने सारी चीज़ें ना मतलब एक तरीके से तोते की तरह बोल देते हैं टू द पीपल दे लव. दे डू नॉट ट्राई टू हाइड थिंग्स फ्रॉम पीपल. ठीक है, दे आर like they keep their relationship crystal clear and they love to do and they expect the same from the other person as well. अब अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है तो that's their destiny. But हाँ, most of the Scorpios love to be loved. Coming to the people who have chosen the number 6 and have the zodiac Scorpio. If you have chosen the number 6, don't forget to listen to it really carefully. Again, choosing one card for career, one for love, and one for finances. Coming to the career का card, I have got the 10 of Swords. So I feel कि ये time you are not going to get a lot of opportunities. आपका अगर कोई existing career field में आप हो या कुछ भी है तो I feel कि आप ना उस चीज़ को enjoy नहीं कर रहे हो. You are not feeling really good doing that or opting that career. If you are pursuing doctor or if you are pursuing engineering, whatever it is, you're not feeling the right side. You're not feeling the way you should feel pursuing one career. ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि do not go for something जो आपको forcefully opt करवाया गया है. ठीक है, if your family has asked you to opt engineering or doctorate or anything, like anything, अगर आपका मन नहीं है उस चीज़ में then do not go for it because it will make you fall in a situation जहाँ पे you will be doing it just like a robot having no feelings for that work. Coming to the love का card, I have got the Emperor. So I feel कि बहुत लोगों का जिन्होंने 6 नंबर चूज़ किया है and have the zodiac Scorpio, उनका relationship could lead to another level. ठीक है, हो सकता है कि those who are in a relationship since a long time तो उनका connection they could take on next level and make it official by making commitments for marriage or something. But if you are new to this, new in your relationship, then हो सकता है chances are there that your family may find out about this and give you the right advice कि आपके लिए क्या सही है and क्या नहीं है. There is no need to just get scared कि भाई family को पता चल जाएगा. They are going to give you the best advice. Try to be more mature.
rather than thinking कि भाई चीज़ें मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह मत सोचो कि हाँ प्यार है. Just think कि चीज़ें कैसे जाएंगी in future, because think about the longevity rather than thinking about the short period of time कि आज रह लेते हैं, कल क्या होगा देखा जाएगा. Don't go for it. Coming to the third card, that is finance. You are going to grow a lot in your finances. You are going to get a lot of money in your finances, abundance, opportunities, everything. You are going to grow in it, and you will take people with you as well, ताकि वो भी grow कर सके. मतलब आप ना सबको साथ लेके चलोगे for your finances, and that will help you more. That will bless you more with the universe happiness कि आपको अपने फाइनेंसेस में और ग्रोथ मिलेगी. जैसे कि आप दूसरों की भी हेल्प करते जाओगे, सो यू विल गेट मोर ऑफ इट. लाइक अगर आपने किसी को 10% हेल्प की, यू विल गेट 100 times ऑफ इट एज अ रिटर्न. Okay, so coming to the last number, the 9 number. So the people who have chosen the number 9 and have the zodiac Scorpio, let's see कि उनके लिए Scorpio season कैसा जाने वाला है. I have mentioned it earlier कि Scorpio season will start from 23rd of October till 22nd of November. Okay, I have got one card for हमारा career right here in front of me. बाकी दो के लिए भी will spell the cards and find out कि हमारा क्या कार्ड आता है for love and for finances right here. So these are the three main fields जिनके बारे में लोगों को जानना रहता है. Most of the times I have experienced it. जितने भी मेरे clients रहे हैं, I have experienced कि सबको इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में जानना होता है. Health people can manage every time and बाकी चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं, but these three things are something people are worried about the most. Coming to the career का कार्ड, stop being overburdened. हर चीज़ का burden खुद पे मत लो, ठीक है. If you are a student, do not take up the burden कि हाँ भाई मेरे को assignments भी करने हैं, मुझे अपना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी. do not take over burden. सिर्फ उतना चीज़ें ऑप्ट करो जितना you can handle on your own. अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी रिलेशनशिप लाइफ, किसी भी चीज़ को अपने करियर से मिक्सअप मत करो, बिकॉज इट विल मेक यू फॉल इन दिस सिचुएशन कि आप हर चीज़ को एक साथ लेके चलने की कोशिश करोगे एंड यू विल गेट टायर्ड एंड जस्ट लूज देम ऑल. सो ये चीज़ बिल्कुल मत करना. कमिंग टू द लव का कार्ड, आई हैव गॉट एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एस कार्ड signifies new beginnings, new opportunities, new outcomes, new things coming your way. ठीक है, तो हो सकता है गुड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में आए. लाइक इन टर्म्स ऑफ लव, यू कैन गेट एन ऑफर फ्रॉम somebody willing to take your stand. You will get an opportunity really well about your connections. अपने connections में you are going to grow. आप अगर किसी existing connection में हो तो it is going to bring in more love and आपका connection अलग level पे भी जा सकता है. whether it is romantic side, whether it is commitment side, you are going to be really happy this Scorpio month. This will be the month for you to rule your love life. Coming to the last card, that is finances, I have got the King of Pentacles. So finances में you can see कि this king is managing a lot of things. तो अपने finances को hold करके रखो, ठीक है. You are holding your finances, but इतना भी मत करो कि हाँ आप अपनी खुशियों को मारो या ऐसा करो कि हाँ बस पैसा बचाना ही बचाना है. डोंट डू इट. जहाँ पे यू थिंक कि हाँ स्पेंड करने से यू विल बी हैप्पी, योर फैमिली विल बी हैप्पी, वहाँ पे स्पेंड करो, बट इतना भी नहीं, खुला खर्चा नहीं, ठीक है. इतना करो कि हाँ इट्स वर्थ डूइंग एंड एवरीबडी गेट्स हैप्पी एंड आपकी जो फाइनेंस शीट है वो भी ख़राब ना हो, ठीक है. So try to balance more of your finances. You are going to get a lot of money this month. You are going to attract a lot of money. हो सकता है you can be promoted to another level. You can get bonuses. You can get everything. You will be getting extra money for your hard work. Everything. It can be anything. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. Your finances are going to be really strong this month. Finances मुझे overall सभी के लिए अच्छे लग रहे हैं. बस मैं यही बोलना चाहूँगी whether it is number 1, 6 और 9 कि फाइनेंसेस में अपने पैसे को होल्ड रखो, बट इतना भी नहीं कि आप खुशियों को मारो, और इतना भी स्पेंड मत करो कि हाँ आपका बैलेंस शीट ही ख़राब हो जाए. ये नहीं करना है. अपने घर के खर्च को, अपनी पर्सनल खर्च को, हर चीज़ को बैलेंस करके चलो. ब्रिंग इन बैलेंस टू योर लाइफ एंड यू आर गुड टू गो. इफ द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू
guys. Don't forget to like this video and make sure to subscribe to my channel for more such videos. Do drop in a comment आपको वीडियो कैसी लगी, and do follow me on my Instagram handle and book a one-on-one session if you want to have a personal reading with me. That is it for today's video, and I will be seeing you in the next one. Bye and lots of love.